जब मूवी का रफ कट रेडी हो गया था तो दे वर स्क्रीनिंग इट इन अ प्राइवेट स्क्रीनिंग में देख रहे थे एंड J.D. Chakravarthy was sitting and there was he heard Ram Gopal Varma talking to someone and the voice sounded familiar to him and the voice said कि रामू तेरी पिक्चर बहुत अच्छी है लेकिन अगर कल को नहीं चली ना तो ये तेरे हीरो की वजह से नहीं चलेगी क्योंकि ये नहीं समझ में आ रहा मुझे एंड he realized वो वॉइस अनिल कपूर की थी and he was just frozen कि oh god ये क्या हुआ and then the movie worked and everything happened and इसकी I think success party I think रामोजी में कहीं थी and then Anil Kapoor met J.D. Chakravarthy and he said यार मैंने रामू को बोला था कि अगर ये पिक्चर चलेगी तो सिर्फ यही वजह से चलेगी. Why do you think Satya is considered a classic? A movie hits the sweet spot when it is a masala movie because then that reaches to the wider audience and then they're able to also consume something new in that masala cover, right? तो सत्या ना that's where सत्या hit और क्योंकि वो एकदम भी आर्टसी नहीं थी और वो एकदम मतलब मेन स्ट्रीम जो तब प्रेवलेंट था तब जैसी नहीं थी जैसे शिपाली ने कवर किया कि वहाँ पे तब ये तो लव स्टोरीज बन रही थी या फिर बलवान दरार टाइप की मूवीज बन रही थी, राइट? तो ये उनसे ना ऑल्दो उसमें कैरेक्टर्स जो थे वो मतलब वैसे ही थे कि दे आर टेकिंग रिवेंज, जैसे यहाँ पे भी गुरु नारायण को वो एक सेल्फ डिफेंस के तरह से मारते हैं एंड देन यू नो दैट सॉर्ट ऑफ ब्लोज अप, वो कैसा होता है एंड दे ट्राई टू इंक्लूड दैट गुलशन कुमार का शूटिंग वाला जो था प्रोड्यूसर के साथ वो सारे एलिमेंट्स डाल के, तो इन्होंने क्या किया था रियलिज्म और ये जो मसाला था ना इनको बहुत अच्छे से मिलाया था इन्होंने और रेलेवेंट इसलिए इन्होंने तब बता दिया क्योंकि बहुत सारी चीजें तब ऐसी हो रही थी जो तब इंडिया में भी हो रही थी और उन्होंने मूवी में उसकी डिटेल्स भी डाली थी, तो वो मूवी इतनी आइडेंटिफाइबल बन गई ना क्योंकि इवन दो लाइक आई वाज आल्सो व्हाट 7 व्हेन मूवी केम आउट बट वो उपहार सिनेमा फायर एंड यू नो अबाउट दीज थिंग्स एंड 93 रायट्स एंड ब्लास्ट यू हैव हर्ड ऑफ दीज थिंग्स ना मतलब ओवर द इयर्स उसके कॉन्वर्जेशन या उसके कभी कन्विक्शंस चल रहे हैं तो यू ऑलवेज गेट टू नो दीज थिंग्स मतलब पासिंग बाय में भी, तो ऐसा होता था कि मतलब वो बहुत रियल इवेंट्स को लेके या रियल टचेस को लेके ना उन्होंने वर्ल्ड जो कंस्ट्रक्ट किया था ना वो इतना आइडेंटिफाइबल हो गया था कि लोग सब पहचान पा रहे थे कि किसकी स्टोरी है. थोड़ा सा जैसे इन्होंने शायद अरुण गवली का टच भी डालने की कोशिश की थी इसके भिखू मात्रे के कैरेक्टर में बिकॉज मोस्ट ऑफ द गैंग्स यूज टू बी रन बाय लाइक not to make put a religious angle on it but mostly they were run by Muslim community, Muslim gangsters, but Hindu gangsters कम थे उस समय एंड लाइक अरुण गावली वाज वन एंड इसमें भिखू मात्रे को वैसे बताया गया है, तो आई थिंक वो जो था ना वो लोगों को मतलब सबकॉन्शियसली रिलेटेबल लगा या फिर आइडेंटिफाइबल लगा, तो फिर आई थिंक दैट जस्ट वर्क फॉर पीपल, मे बी दैट्स व्हाई इट्स कंसिडर्ड अ क्लासिक क्योंकि अभी की भी मतलब मूवीज अगर मैं देखता हूँ ना तो व्हाट आई फाइंड मिसिंग ना कि मुझे आजकल की मूवीज में आज दिखता ही नहीं है, मतलब अगर मैं 2023 की कोई मूवी उठा के 2050 में देखूंगा तो मुझे नहीं लगता मैं बोलूंगा कि 2022 23 ऐसा दिखता था, 2023 ऐसा दिखता था, बट आज भी मैं 98 की मूवी उठा के देखूंगा बोलूंगा हाँ 98 का मुंबई ऐसा ही था, तो वो आई थिंक एक कल्ट बना देता है, वो बहुत कैप्चर बहुत अच्छे से कर लेता है पीरियड को. Yeah, I think that is a very brilliant point you made because even if you remember the opening sequence of the film is sort of a poem and it's showing you Mumbai, the stock video of Mumbai, and every now and then even when there is क्या बोलते हैं between conversations or between two scenes filler हमेशा मुंबई की images, मुंबई की videos and like clips होते हैं हमेशा. I remember like bandstand काफी दिखाया है फिल्म में and बैंड्रा खासकर काफी दिखाया है and many several other aspects of Mumbai as well have been shown a lot. And the poetic element that the shuru hi वैसे हुआ था, I think that is what brought out the fact that these specific stories that you are focusing on is surely what like that's a story, but it's a larger story about Mumbai as well and what Mumbai was back then. Like I really like the point you made about the small like actual incidents which were brought in. Like I was reading कि इसका idea कहाँ से आया. So RGV, what based on what I read, RGV was supposed to meet Gulshan Kumar for some meeting वगैरह था उनका. सुबह सुबह I think phone आया हुआ कि yeah, we'll be meeting at this hour. And उसकी एक घंटे में गुलशन कुमार का कुछ 17 या 18 बुलेट शॉट से उनको मार दिया गया एक तरीके से. So I think that sparked an idea in RGV's head कि while thinking about it कि how do I show this cinematically, and he thought about कि जो बंदे ने उनको मारा है वो किस टाइम पे उठा होगा, वो बंदा उसकी सुबह कैसी हुई होगी,
उसने घर पे क्या बहाना दे के वो निकला होगा. Like all these small ideas that might have popped up based on that, just because he had an inquiring nature about it. uh, Film का वहां से शुरू हुआ, and I think that is the element of the film which the intent is very true. And that is जो लास्ट भी आता है क्रेडिट्स में, जो पहला लिखा हुआ आता है about why the film was made. I think that makes it even more important कि अच्छा, this was not meant to stylize or romanticize the idea of being a gangster, but to actually show that ये लोग जो भी कर रहे हैं, पहली बात तो they are way up inside their heads, and secondly ये जो करते हैं उनके consequences होते हैं खुद के लिए भी और उनके आसपास के लोगों के around, even like not even people who are not even directly related to you, like randomly people who were there in the streets, or everybody is involved or affected by what you do in a sense. So I remember like एक interview सुन रहा था मैं. In that interview, Saurabh Shukla is mentioning that there are two kinds of gangster films. One is the Goodfellas kind, one is the Godfather kind. So Godfather kind is one where the where like it's a specific certain world that is being shown, and if you don't meddle with them, you will live fine. Like आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. It's a different world. You're not connected. आपको देखिए शायद impact नहीं पड़ रहा है. But Goodfellas is the kind of film जहाँ पे ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको शायद अफेक्ट हो रहा हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली. दे लिव विद इन यू, दे आर कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी इन अ सर्टेन सेंस, एंड दे वांट टू ट्राई. ही वाज इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ मोर Goodfellas version of the film than a Godfather one. That's what interested him, and I think it really fits. Like I think reading about these things makes it even more interesting कि अच्छा इस वजह से, अच्छा इस तरह से ये लोग का फिल्म बनाने का मकसद था और ऐसे बनी है फिल्म. And I think what makes it a real classic, what makes Satya a true classic is it was revolutionary in so many ways. There is such interesting and unique camera work in the film. There are long takes, there is POV shots, and मतलब वो aspect बहुत interesting था. The fact that it had such a unique commentary about the society, about criminals, about men, about so many other things, and the dialogues. Like Anurag Kashyap has said this so many times that uh, I don't remember who, but it's said a lot of times that इसके पहले डायलॉग्स उर्दू में लिखे जाते थे. इसके पहले डायलॉग्स बहुत एक पोएटिक लिरिकल एलिमेंट होता था उसमें. They didn't have a street language. This film had a very street language, and I think they added the writing team in a such, or the dialogue writing team in such a manner कि वो street language ज़्यादा आ सके इसके अंदर. And obviously, like the songs, as you mentioned, very specific to the specific occasion or a specific moment it was there. And the actors, like I mean, so many actors are there who we are like, Arey, these are such great artists today. But some of them, sometimes you don't even know their names, but we know who they are. Like I was thinking about it, there is Manoj Pawa, there is Neeraj Vora, there is Sushant Singh, there is Snehal Dabi, the guy who is killed. Then Paresh Rawal is there. Obviously, Saurabh Shukla, Manoj Bajpayee, and all the bigger ones are also there. And also, like, remember that small scene where Anurag Kashyap has a cameo? आपको याद है शुरू में when the producer जब जो इसको गोली मारते हैं, उसका कैरेक्टर संजय मिश्रा कैरेक्टर गोली मारता है. So उस वाले में if you remember, जब वो जो प्रोड्यूसर होता है वो फिल्म सेट से चल के बाहर निकल रहा होता है, एंड दो तीन लोग स्ट्रगलिंग एक्टर लोग बात करते हैं आके वगैरह वगैरह. बट बिफोर दैट ही टॉक्स टू वन ऑफ द पीपल कि ये आज के आज पूरा हो जाना चाहिए. इट सीम लाइक सम एडी और समबडी. दैट एडी वाज अनुराग कश्यप. आई सॉ अ कपल ऑफ टाइम्स इन तो वही है. सो मेनी इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट्स were there in the film, which is why, and it opened doors for each one of them in their respective careers as well. Satya इतना important character है क्यों? I mean, the film could have easily been made without the character of Satya. What element does Satya bring into the story that makes it more interesting? So my own kind of theory was that you see how like our moral policies of honesty kind of drives through a majority of our lives, and when we are young or when you're naive, it do I mean honesty is one of the major forces we reckon it, but as we go on, there is a lot of mud which we get into. So sometimes honesty takes a back seat, and it twists and turns itself into different forms, and maybe towards during the towards the end of our journey, maybe we want to cling back to that. My own theory was that is why the name of the character was Satya, because I think
I mean, it's a completely, there is no base to it. It's just my theory that, he named the character as Satya because he wanted it to use as a driving force. And that is why the arc of the character is also shown like that. That how it stems from one thing, goes through an entire journey, and in the end there is a remorse. There is a not a remorse, I would say, but yeah, like he kind of goes back to a place where he wants to cling back. Maybe I mean, given an option, he would not die. He would just uh, take the love of his life and go ahead and live a better life. So I think probably that's why Satya was very important, because it is a trunk on which the entire story is mapped upon. All the characters branches out from that in one, not branches out in branches out, but yeah, like it's kind of latched to in that sort of sense. I think the morality, the focal point was Satya at the beginning because he was observant. He was like पानी, मतलब हाँ, तुम जैसे उसको डालोगे वो वैसे चले जाएगा. Like अगर वो यहाँ नहीं, तो he could, if he met somebody else in the bar जो उसको किसी और में जगह पे ले जाता, तो वहाँ चले जाता वो everything happening to him is he's way too much in the moment, for anything to make any decision in the beginning. After a certain point does he realizes or takes decisions on his own, वरना उसके पहले तक तो जो हो रहा है बस होने दो. Let it's affecting him in different ways. So that is the interesting quality कि he becomes like the focal point to branch out from and see the world, like because हमें भी पता नहीं दुनिया के बारे में. And it's also very interesting, like obviously the JD Chakravarthy, the person who's playing it, was chosen because पहले शायद काम किया and impressed by his work and all of that. But he is from a different culture altogether. That makes it more interesting. Not like वो मुंबई का ही था किसी और एरिया में बाद में इसमें लग गया. The From a different, authenticity of the character is also maintained. exactly. Like I think वो चीज कि वो बाहर से ही है, वो यहाँ का भी नहीं है. That makes it even more interesting, I feel. I was trying to eliminate Satya from the equation and thinking कि how things would have gone if he was not there. तो या तो ये होता कि गुरु नारायण उसको शुरू में ही बिट्रे कर देता, और गुरु नारायण would have killed क्योंकि Bhikhu was emotional about their whole camaraderie, right? And eventually the politician would have killed गुरु नारायण, ठीक है. बट इस केस में क्या हुआ ना कि क्योंकि उसने इंस्टिगेट किया सत्या ने कि मतलब कर दो कि इसको किल नहीं करेगा तो ये कल को तुझे मार देगा, एंड इन द एंड भिकू डाइज बिकॉज द पॉलिटिशियन इज पिस्ड कि भाई तूने मेरे इलेक्शन के पहले क्यों उसमें छेड़खानी करी, मतलब कुछ भी हो सकता था. इट डिड वर्क आउट इवेंचुअली, बट वो उसमें था कि कुछ भी हो सकता था. तो अगर सत्या नहीं होता तो वो शायद जो एब्रेशन था उन दोनों के बीच में, पॉलिटिशियन भाव और इसके भिकू के बीच में, शायद वो नहीं होता. और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है टुवर्ड द एंड. और इन सबका जो फाइनल होता है, जो इसका कैरेक्टर है मुले, एडवोकेट मुले, और ये भी सॉरी कल्लू मामा का भी कैरेक्टर, ये सब इनका फेट वो नहीं हुआ होता जो था इवेंचुअली, जो सब रहा. एंड हाँ, मतलब आई थिंक यही था कि इफ यू एलिमिनेट, मतलब द मूवी डजंट वर्क बिकॉज बहुत डिवॉइड हो जाती है किसी पॉइंट से वो, या किसी एक एंगल से. एंड आई थिंक यही रीजन भी है कि इसके बाद में जो जो गैंगस्टर मूवीज आई जो संजय गुप्ता वगैरह ने बनाई थी, वो इसलिए वर्क नहीं करी क्योंकि बिकॉज आपको कभी एक एंट्री पॉइंट नहीं दिया, यू जस्ट आर स्मैक डैब इन द मिडल ऑफ थिंग्स. और ये जो ट्रॉयका है पूरा, सत्या का, कंपनी का और डी का, इन तीनों में एक कैरेक्टर होता है जो आता है एक अनरिलेटेबल जगह से और आउटसाइड से, और तीनों में यहाँ पे जेडी चक्रवर्ती, विवेक ओबरॉय एंड रणदीप हुड्डा. सो ऑल ऑफ दीज थ्री पीपल मेक देयर प्लेस इन अ वेल एस्टैब्लिश्ड थिंग. तो ये हमेशा आपको एक एंट्री देता है और ये देता है पाथवे कि अच्छा आप इस वर्ल्ड में अब आए हो, अब ये कैसा है. छोटा सा ट्रिविया जेडी चक्रवर्ती पे. तो बेसिकली जब मूवी का एक रफ कट रेडी हो गया था तो दे वर स्क्रीनिंग इट इन अ प्राइवेट स्क्रीनिंग में देख रहे थे, एंड जेडी चक्रवर्ती वाज सिटिंग एंड देयर वाज he heard Ram Gopal Varma talking to someone and the voice sounded familiar to him. एंड द वॉइस सेड कि रामू तेरी पिक्चर बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कल को नहीं चली ना तो ये तेरे हीरो की वजह से नहीं चलेगी, क्योंकि ये नहीं समझ में आ रहा मुझे. एंड ही रियलाइज वो वॉइस अनिल कपूर की थी. एंड ही वाज जस्ट फ्रोजन कि ओ गॉड ये क्या हुआ. एंड देन द मूवी वर्कड एंड एवरीथिंग हैपेंड, एंड इसकी आई थिंक सक्सेस पार्टी आई थिंक रामोजी में कहीं थी. एंड देन अनिल कपूर met JD Chakravarthy and he said
यार मैंने रामू को बोला था कि अगर ये पिक्चर चलेगी तो सिर्फ तेरी वजह से चलेगी। I was thinking also about the matlab, so a friend of mine is working. I recently worked with students who belong to a very specific lower class backgrounds. उनके साथ में she was teaching them, and she tried to understand the way the lives of the families are, and किस part of the society से वो लोग आते हैं, and why they get so influenced by these local leaders or these gang leaders, and why they feel a sense of belongingness with them. I just wanted to like tap into that a little bit. Like, why do you think this ego, this respect, this friendship, and matters so much in these specific milieus and these specific areas? And I mean, I also know that Anurag Kashyap had mentioned that while making the film, one thing that was very certain with them was they were sure uh, that they were making it with the idea that there are no born criminals, and the society in a sense creates them in one way or the other. कि film का morality कहाँ है? Like, what is the director's morality in this? What's the intent? Do you really feel कि ये film क्या बताना चाह रही है आपको, कि कोई solution है नहीं है, क्या encounter is the right thing to do, क्या education जो एक पुराना कमिश्नर मेंशन करता है, that's the right thing to do? Like, what's the POV, what's the intention or the motive of the filmmaker? Yeah, I feel like इसमें at the end, this thing also comes up, a text comes up that violence resorts to, जैसे इंतकाम का result Revenge begins इंतकामी revenge. होता है. Yeah, because the same thing also I noticed in रक्त चरित्र when I watched it when it released, कि वो उसके end में भी there's like a point that he wants to place, Ram Gopal Varma as a filmmaker, के violence से violence ही आएगा, and revenge will ultimately end in your own destruction, no matter what your righteous this thing is, that because he did this to me. And given the fact that Satya is constantly stormed on, but still that's, I think, something that he wants to like highlight, ke with his movie making as a medium, ke matlab violence don't get into like killing each other, because that will ultimately, an eye for an eye, make the whole world blind. So that is something that I thought was very like, I mean, was stressed upon. मतलब ऐसा लास्ट में टेक्स्ट डाल देते तो थोड़ा वो सटलिटी वाला चला जाता है फैक्टर, आई फील, वो जो पूरे मूवी में बना था, दैट वन. बट आई गेट इट वेयर इट कम्स फ्रॉम, लाइक he's like, I think someone mentioned that it is kind of a mirroring of his own entry into Bollywood and stuff, ऐसा. So yeah, that way I feel, yeah, that's what I feel about that. The ego thing, I think, yeah, the first time when he splashes like the drink on his face, he's like, although he stares at him, but then he's again calling him to work for him, and then he's stomping on him constantly. वही चल रहा है, तो like कितना तुम एक इंसान को कितना पुश कर दोगे, तो he will retaliate and he will want to kill you then if you constantly try to stomp some, I mean. What I felt throughout the movie was that he was just in the society, the mirroring the present 90s उस time का contemporary Mumbai, and whatever was there in the society, he was just mirroring it throughout the movie. If you just take out that last thing now, maybe like sometimes you never know where the things comes from, so maybe come from somewhere that like just put this will make you, this will help you easily pass the censor or something like that. But if you just take out that, the movie, it never really felt to me like a like कि कुछ बोलना चाह रहा है, नहीं कुछ 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 जस्ट दिखाना चाह रहा है कि देखो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, नॉट एट ऑल. इट वाज जस्ट द मिरर. सो यार मेरे को ये लगता है कि जो लास्ट स्लाइड है दैट इज जस्ट बिकॉज वो सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया होगा. बिकॉज आई डोंट फील कि एनीथिंग इज like there is anything he wants to portray. He just like giving you a world and just keep, it's on you to justify on that ego thing na, that if I quote this big legend, एक मेल ईगो होता है ना, वो एक एटम के like smallest particle से भी छोटा होता है. What I feel is कि ये कल्चर का ही पार्ट है कि I need to like prove something to someone or something like that. And even in case of friendship also, because this is also part of our culture na. Even if you read Mahabharat, even there the Krishna and Arjun like friendship is there, and like that bond is so strong, and like and that we are like reading from generations, and that thing is in the society ki like कि friendship के अंदर तो like जान भी दे दो and all that, there that is there. So I think कि because वो सत्या का इतना influence हो गया था भीखू मात्रे पे, कि that he like just got like he was the brain and Bhikhu was the body.
that kind of situation was there. I know one trivia of Satya that I guess Ramu didn't tell anyone that Bhikhu Mhatre is going to be like killed in this particular shot, or like वो मरने वाला है इस पूरी स्टोरी में. And then he just placed a camera, like वो होता है ना नाक के नीचे जो उसका एंगल है, so he placed somewhere, and then like when he was shot, like the reaction that Saurabh Shukla gave and everybody gave were like fuck ये क्या हुआ. And like they were also not कि aware कि ये script का कुछ part है, तो that was so genuine reactions. एक और ट्रिविया की बात हो ही रही है तो इन दैट सीन इटसेल्फ जो उसका जो रूम है पीछे पेंटिंग देखी किसी ने द पेंटिंग इज ऑफ द महाभारत युद्ध हैपनिंग कुरुक्षेत्र में एंड द Yeah, एम्पर yeah. पूरा वो सो वो भी एक सॉर्ट ऑफ फेल्ट मेटा आई एम नॉट श्योर वो खाली है कि उसका कुछ हाँ हाँ डाला था उस चीज को या तो सब ट्रिविया शेयर कर रहे तो मैंने भी एक ट्रिविया जाना है तो शेयर कर देता हूँ तो मतलब अनुराग कश्यप डज दिस थिंग दैट ही डोंट टेल दैट ये डायलॉग है सीन में जाते हैं इम्प्रोवाइज करके दे देते हो तो आई केम टू नो दैट मोर और लेस द होल film has dialogues which were improvised means because starting from that scene where uh, what to say the Sushant Singh character get a scar through that knife he screamed out so loud that was not a part of the whole scene so from that scene Ram Gopal Varma took the decision that we will tell the whole scenario to the actors and they are allowed to improvise so mostly dialogues they have improvised means the actors have improvised so it was not written but in previous gangster movies we get all that uh, iconic dialogues as Yeah. Sankalp also said that from Urdu हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा that kind of poetic lines so this was not a part of Satya like another scene that made the morality of the director and the team very clear was previous commissioner mentioning that that you know education जरूरी है ये अपने आप ठीक हो जाएगा and all of that and the reaction of Aditya Srivastava की क्या बोल रहा है नहीं होगा ठीक मैं जाके मैं करता मुझे पता है एंड देन दिस गाय मेंशनिंग परेश रावल मेंशनिंग दैट हमें भी शौक नहीं है लोगों को मारना वी हैव टू डू इट बिकॉज ये हमें मुझे भी पता है कि सोसाइटी की वजह से ये क्रिएट होता है the society creates these opportunities and the lack of it and because of which these people have sprung up because of the natural hierarchy that society brings up तो ये reactionary होता है ऐसी चीजें होना and like he understands that but he also understands that situation इतना ग्रिम है इतना स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट है अभी कि हम लोग अभी लार्जर मोरालिटी पे अगर जाएंगे तो वो नहीं होने वाला है एवरी टाइम द पुलिस विल बी एट द रॉन्ग पुलिस ब्रूटैलिटी का बहुत इंटरेस्टिंग चीज में बात किया है इस फिल्म के बारे में हिज पॉइंट ऑफ व्यू मेड सेंस टू मी एज वेल बिकॉज there are two realities in which we live there is one experiential reality which we actually live and there's one reality which is more theoretical so the previous commissioner mentioning that education is the way to go ahead and इनको समझाना जरूरी है it is the more theoretical one ki sure yes that's how it should be done but a more experiential one will be very different from as a lived reality will be very different from what you know you theoretically might feel would be the right thing to do and I think a lot comes down to eventually the fact that who are the people they're looking up to while growing up and who are their what is their understanding of an aspiration what is their understanding of someone being successful someone being respected if those immediate reference points are those which fall under the category of doing crime then that is the side they lean towards and which is why and this works same thing works so much in with respect to them even in like people following certain what do you call these godmen at times as well they give them a sense of identity a sense of purpose at times as well easily there's a sense of connection they feel with such people and I think the reason why this film also works very well is that it had a very contemplative, observant POV all the time. One camera angle or one way that was repeated a lot was the, the 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 camera showing the entire room to you before moving to the actual space जहाँ पे dialogues and जो main शुरू होने वाला है. Even the first time when Satya enters भीखू मात्रे का जो पूरा जहाँ पे वो कल्लू मामा से मिलने पहली बार आता है तो the way everything is shown first and then अंदर जाते हैं it's been done 3-4 times at least in the entire film
and that is very unique. Even the way the Kallu Mama song has been shot. So I heard that the entire song has been shot by the ADs only. So I think Anurag Kashyap and others were involved in shooting that, and not him himself. He gave a lot of freedom in that regard, because Anurag Kashyap mentions that he was one of the most secure people he has worked with, which is very interesting to know. And उसके अलावा also these क्या बोलते हैं, the way certain camera angles, and they didn't, मतलब they felt like everything was well thought out. uh, so and बहुत interesting इसलिए भी था कि you he wanted us to feel empathy or sympathy with these people at times, but बीच बीच में एक detached POV भी आता था. Like for example, the last scene when Satya is dying, I don't feel bad for him. I don't feel his. I feel, मतलब भाई बस, like हो गया. Let it go now. You are done now. I feel bad for Urmila's character, obviously, but at the same time, थोड़े time पहले, when things were going bad for him, when he was actually vulnerable, थोड़े time पहले, I was feeling bad for him. So the same camera is letting me feel very bad for him, and like just like bro ho gaya, let it be now. So that detached POV and also having that empathetic POV बहुत ही unique था. Like the scene I'm mentioning is the one where Bhikhu Mhatre and they both are sitting and they're talking just before he says जब वो बोलता है कि दुबई चले जा मैं भेज दूंगा वगैरह वगैरह. Such a normal friendship like conversation that was, and then whatever happens, and that makes you feel कि you know what, things might have been bad for you, the whatever happened to you, but the decisions you are making right now, those are yours, and that's why you need to face the consequences. One thing which just reminded me when I was rewatching the film yesterday after so many years, actually, that monologue which you had been talking about, the monologue of Paresh Rawal, it immediately hit me back to the to one of the monologues by Nasiruddin Shah in The Wednesday, where he says ना कि आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौर साहब, आप उसको मारते, आप पालते नहीं, आप उसको मारते हैं. तो आज वो दिन है, मैं अपना घर साफ कर रहा हूँ. It's a very similar kind of a thing which Paresh Rawal says. Obviously, Satya was way like much before ahead, like much before done. I think, but I'm also always still of the opinion that sure, police vigilantism or any other form of vigilantism exists, and वो उसका एक reasoning होता है उसके exist होने का, but उसको celebrate जब भी किया जाता है, I'll never support it. Like that's a very personal thing. Like I mean, I'm happy that even a very commercial film like Gabbar is back, which Akshay Kumar was there in, वो भी मतलब I felt in it throughout the film कि बहुत इसको मतलब celebrate कर रहे हैं, but eventually his arc was that he is killed. So like I think that consequence is very important. One film that there was no consequence and I still find it not so cool, that film, very, I don't know, Peg will love it, but Special Chabbis, like it didn't have a consequence, and I'm like, no, like it doesn't work for me if it doesn't have a consequence. Even Bhavesh Joshi had a consequence, even though we were completely on his side because whatever was happening was completely wrong, but even that film had a consequence because you went against what was expected, like the right way. So like it's very important for me to have a consequence of whatever you do. Because you spoke about the camera work, right? So if you see, this is one of the movies which has a very distinct camera work than rest of the Ram Gopal Varma filmography. Like in Shiva, they first time brought steady cam to India, to one take shot, ऐसे shots ना वो तो क्या रामू sort of became obsessed with those kind of कि मैं create क्या कर सकता हूँ, जो बाद में जाते जाते लेट 2000s में ही वाज लाइक कि मैं डच ही शूट करूंगा हर मूवी, तो टेढ़ा कैमरा रख के चल जाता था कहीं भी. तो इस मूवी में ना बहुत इंटरेस्टिंग था, और बिकॉज यू समवन आई थिंक राइटली पॉइंटेड आउट, क्योंकि मुंबई को कैप्चर करना इंपॉर्टेंट था उसमें. तो both the cinematographers Gary Cooper and this guy Mazhar Kamran, they are documentary filmmakers, and that was the point कि मतलब how do you shoot it, because Ramu was like कि मैं तो रख दूंगा कैमरा ऐसा, and they were like कि नहीं, you don't need to do that, let's go into the spaces. तो ये जो usually होता है like you mentioned कि they are going through these dark alleyways और फिर जाके वो रूम पे आते हैं, तो वो सब इसीलिए था क्योंकि it was coming from, क्योंकि ये सब हम डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं, तो वहीं से मतलब बिकॉज द पीपल हु वर हैंडलिंग वर लाइक दैट. एंड वन अदर थिंग व्हिच हैज स्टूड विद मी इज लाइक साउंड ना बहुत इंटरेस्टिंगली यूज हुआ है मूवी में, इन द सेंस कि बीजीएम्स और वो तो है ही, बट फॉर इंस्टेंस ये वाला जो सीन है जिसमें वो रोनू सागर को जाके स्केयर करते हैं,
और वो अगले दिन आके नीरज वोरा ही ऑफर्स गुरुला मातुर का विद्या द चांस टू सिंग, एंड विद्या बस उसे सी ऑफ करने जा रही है, और उसी सीन पे ना ऑडियो शुरू होता है चंदर का, और वो बोल रहा है सत्या भाई तेरा काम हो गया। एंड तो वो ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी कि मतलब वो उसको कट करके भी कर सकते थे, बट वो वहां पे आता है ना तो इतना सही फ्लो में बैठता है कि एंड इट बिकम्स लाइक अ मॉकरी इन दैट मोमेंट, एंड इट मेक्स एलिवेट्स द फनी क्वेश्चन ऑफ इट। तो आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग था। एक तो जो हम लोग इसकी भी बात कर रहे थे कि सेटिंग की बात है, उसमें एक चीज दो चीज और ऐड करना चाहूंगा कि एक तो अगेन चंदर सी स्नेहल दावी का जो कैरेक्टर है, वो एक सीन में इट्स अ थ्रो अवे लाइन, एंड इट्स नॉट सपोज टू बी इंटेंडेड एट द मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, बट इट डज गो लाइक कि अक्खा मुंबई लफड़े में ब्लास्ट हो गया और अपना सत्या सबसे फास्ट हो गया when he sees Satya talking to Vidya for the first time. Many people assumed it was a reference to the Bombay blast, but it wasn't. Like, although Ramu has this knack of like putting these things, जैसे रंगीला में भी वो they are patting down this guy Amir Khan outside the theater, and he says मुंबई में स्कैम करने वालों को छोड़ दिया, which was a reference to the Arshad Mehta case. Then दंगा फसाद करने वालों को, which was an actual reference to the 93 case, and all that. So it becomes very like interesting. But and I think Ramu just keeps it because वो लिंगो में आ ही जाता है, क्योंकि अगर वो बातें आसपास हो रही हैं तो यू वुड इनएविटेबली टेक रेफरेंस इट। मीम्स क्या होते हैं? मीम्स आर रेफरेंसिंग द वर्ल्ड एंड न्यूज अराउंड अस ना, इवेंट्स अराउंड अस। तो इवेंचुअली वो तब के मीम्स थे एक तरीके से, कि मतलब पुटिंग दीज डायलॉग्स एंड थ्रोअवे जोक्स इन इट। एक वो चीज थी हाउ चिल्ड्रन आर लाइक अ पैसिव प्लेयर इन ऑल ऑफ दिस इक्वेशन। जैसे जब भीखू मात्रे का भी अरेस्ट होता है, तो वो अरेस्ट बहुत सॉफ्ट नोट पे होता है, पीछे दिल तो पागल है का गाना बज रहा है, बच्चे ब्रेड बटर जैम के लिए लड़ रहे हैं। इट्स अ वेरी लाइक होमली मतलब सेटअप से शुरू होता है, एंड देन द कैमरा ट्रैक्स बच्चे को फॉलो करता है, एंड इट गोज टू द गेट एंड द पुलिस बस थ्रू द डोर। ठीक है, एंड कई बार ना वायलेंट के जो भी शॉट्स होते हैं, इवन ये वाला जो है थिएटर वाला जो सीन है, उसमें व्हेन यू आर रनिंग तो बहुत सारे इंटरकट्स में ना बच्चों के बहुत सारे क्लिपिंग्स डाले हुए हैं, एंड सेम इज डन इन कंपनी ऑल्सो। मतलब तो वो होता है ना कि इनोसेंस और वायलेंस को जब आप एक ला देते हो ना, तो वो इतना एलिवेट हो जाता है, वो वायलेंस ना 10 टाइम्स मोर डेंजरस हो जाता है, बिकॉज व्हेन यू आर लुकिंग एट दीस स्क्रफी स्क्रॉनी बियर्डेड men with weapons ना, you sort of have a certain different feeling. But when innocence comes into play, these kids who have nothing to do with it, they come into play ना, I think वो वायलेंस को बहुत बिना ब्लड लाए वो चीज को इतना ज्यादा एलिवेट कर देता है कि a movie might be very violent while not showing a lot of bloodshed. आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग था। लास्ट थिंग जस्ट गॉडफादर रेफरेंस के बारे में बात करूंगा एक, कि जो सीन है जहाँ पे वो रुनु सागर को डराने जाते हैं, इट वाज सॉर्ट ऑफ अ पैरोडी ऑफ द गॉडफादर सीन, जहाँ पे वो हॉलीवुड जाता है और बोलता है जॉनी फॉन्टेन को खाने का काम देना, एंड द पर्सन डिसएग्रीज, एंड देन ही पुट्स दैट हॉर्स हेड, और यहाँ पे दे डू इट। एंड वो शॉट भी ना अगेन आई थिंक दैट वाज मजर कामरान, कि दे वर लाइक कि नहीं सॉरी हाँ दैट वाज आरजीवी। मजर कामरान वाज लाइक कि वील कट इट टू द स्पीड दिखाएंगे ताकि एडिट में तुम्हारे पास मटेरियल रहे कट करने के लिए, बट रामू वाज लाइक नहीं, तो एक शॉट लेगा, वन टेक शॉट है वो बस कैमरा एलिवेट होता है अपने उस पे प्लेटफॉर्म पे, और वो ऐसा फ्रेम सेट होता है कि वो बाहर का विंडो दिख रहा है दोनों, एंड इट इज अ बिट स्टूपिड क्योंकि कोई भी ऐसा खिड़की खोल के कांच का ऐसे नहीं सोएगा घर में लाइट ऑन करके, बट वो विजुअल उसके लिए उन्हें करना पड़ा। बट वो उन्होंने पूरा एक शॉट में लिया था कि मतलब वो आता है वहां से गोली चलती है या इसे फोन बजता है ये उठाता है, मतलब वो जो पूरा सेटअप था आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब एक तरीके से ट्रिब्यूट भी था, बट अगेन दे डिड इट स्टूपिडली बिकॉज दे वर लाइक कि इसको करने का यही तरीका है मे बी। Ashutosh was mentioning that innocence and violence. So I had a point to make that there was a sequence where police were doing continuous means encounters after Paresh Rawal came into the power of police commissioner. So there is one particular encounter where a child is sitting with a toy gun and he is pointing towards the camera, and his father is having lunch or dinner, and we see intercut shots of police coming through the alleys and small lanes, and finally we only stick to the face of that child, and there is that encounter and the child starts crying. So we are not introduced that whole encounter sequence, we are only introduced that child with that small toy gun. So that also brings the thing that Ashutosh told, that it was trying to bring violence and innocence at the same time. So I will not show violence, I will show innocence, but you will feel violence.